हमारा टॉपिक अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ इज़ अ टर्म यूज फॉर टू डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रम ऑफ लीवर इंजरी एसोसिएटेड विद द एक्यूट एंड क्रोनिक अल्कोहलिज्म। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ लीवर इंजरी एसोसिएटेड with acute and chronic alcoholism। तो इसकी 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज अल्कोहलिक स्टेटोसिस फैटी लीवर। सेकंड होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। थर्ड होता है अल्कोहलिक सिरोसिस। ओके, तो रिस्क फैक्टर द अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स फॉर अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं इसके, वो देखेंगे अभी। ठीक है, all those indulge in the alcohol abuse do not develop liver damage. The incidence of cirrhosis among the alcoholics is autopsy of, मतलब जो भी इंसान अल्कोहल टेक करता है ज़रूरी नहीं उसका लीवर डैमेज होगा। नियरली अबाउट 10 to 20% ऐसे होते हैं कि जिनका लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, why the some individual are predisposed to alcoholic cirrhosis is not clearly known, but few risk factors have been implicated। मतलब प्रॉपर तुम कोज तो नहीं बता पाओगे कि अल्कोहल कैसे डैमेज करता है लीवर को, लेकिन फिर भी कुछ कोजेज हो सकते हैं जो इनको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पहला कोज है ड्रिंकिंग पैटर्न। ड्रिंकिंग पैटर्न क्या होता है? मोस्ट एपिडेमियोलॉजिकल studies have attributed alcoholic cirrhosis to chronic alcoholism. However, incidents suggest that chronic and excessive consumption of the alcohol invariably leads to the fatty liver in more than 90% of chronic alcoholisms. Progressive to alcoholic hepatitis in 20% cases. Eventually to alcoholic cirrhosis is more than 10 years. Eventually to alcoholic cirrhosis in more than 10 years. तो इसमें अवेलेबल इंसिडेंस सजेस्ट डेट। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? इससे ये पता चल रहा है सजेस्ट डेट क्रोनिक एंड एक्सेसिव कंजम्पशन of alcohol leads to fatty liver in more than 90% of chronic alcoholics। Progression to alcoholic
pancreatitis in 10 to 20% cases, and eventually to lick cirrhosis. In more than 10 years. ओके, ठीक है। तो पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता है? जेंडर में जनरली देखा जाता है कि जो वुमेन्स हैव इंक्रीज सक्सेसिबिलिटी टू डेवलप एडवांस अल्कोहलिक लिवर डिजीज एज मच lesser alcohol intake 20 to 40 gram per day. This gender difference is disease progression is unclear but it is probably linked with the effect of estrogens. मतलब फीमेल जनरली ज़्यादा इफेक्ट होती है अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के लिए एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है। थर्ड होता है मेन न्यूट्रिशन। मेन न्यूट्रिशन में क्या है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव माल न्यूट्रिशन ऑफ द प्रोटीन एंड विटामिन इज रिगार्डेड टू एज अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ द सिरोसिस। अगर तुम्हारे में डाइट में अगर प्रोटीन की अमाउंट कम है और मल्टीविटामिन वगैरह इन चीज़ों की अमाउंट कम है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि तुम्हें सिरोसिस होगा, लिवर सिरोसिस। मीन्स सिरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। फोर्थ क्या है? जेनेटिक फैक्टर। Genetic, the rate of the ethanol metabolism is under genetic control. It is chiefly related to the altered rates of the elimination of ethanol due to genetic polymorphism for the two main enzymes system amylase and alcohol dehydrogenase. Various HLA histocompatibility types have been associated with the susceptibility of individual to alcoholism liver damage, but no single genotype has been identified yet. Okay. Metabolism is under genetic control. बस इतना ही ना बेसिकली। इन्फेक्शन is B and C. Concurrent infection with either HPV or HCV is an important risk factor for progressive of alcoholic liver disease. HPV or HCV infection in chronic alcoholics leads to development of the alcoholic liver disease with much less alcohol consumption, 20 to 50 gram per day. Disease progressive at the younger age have greater severity of disease and increased risk of development cirrhosis as well as hepatocellular carcinoma and overall poor survival.
जिसको हेपेटाइटिस बी वगैरह का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, डिजीज ज़्यादा रहती है, तो उसको लिवर सिरोसिस की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। सिक्स्थ, को मोर्बिडिटीज morbidities morbidities comorbidities. Okay. People suffering from some chronic liver disease such as hemochromatosis, non-alcoholic steatohepatitis, diffuse infiltration of the liver by tumor, granulomatous inflammation, are more vulnerable to the adverse effect of alcohol smoking. Smoking. This is an independent risk factor leading to progression to associated liver disease. Okay. अब इसकी पैथोजेनेसिस। Exact pathogenesis of the liver injury is yet unclear as to why only some chronic alcoholics develop the complete sequence of changes in the liver while others do not. It is known that ethanol and its metabolites are responsible for the ill effects on the liver in the susceptible chronic liver having an above mentioned risk factor. The biomedical and cellular pathogenesis due to the chronic alcoholism consumption, circulating morphological lesions of the chronic cirrhosis, chronic hepatitis and alcoholic cirrhosis. मतलब प्रॉपर कोज तो नहीं पता है कि कैसे अल्कोहल मतलब हेपेटिक इंजरी करवाता है या सिरोसिस करवाता है, लेकिन इसमें दिखा रखा है ये। Known that the ethanol and its metabolites are responsible for the ill effect of the liver in a susceptible chronic liver. Ethanol. ethanol है जो मेनली इफेक्ट डालता है। रिस्क फैक्टर क्या है?
जो मैंने पहले स्टार्टिंग में 3 स्टेजेस बताई थी ना, वही अल्कोहलिक स्टीरोसिस, हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस। स्टीरोसिस, अल्कोहलिक स्टीरोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, यही 3 चीज़ें करवाते हैं जनरली। ओके, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस इसमें, और सिरोसिस। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, इन तीनों को।